students, now let us continue chapter arithmetic progression. Today we will discuss a little bit topic that you know from class 10th that I have written here. First one is, if A, B, C are in AP, then twice the middle term equal to first term plus last term, so that B can be written as B is equal to A plus C by 2, so that you can say B is the arithmetic mean of A and C. Now this topic also you know from class 10th onwards. In class 10th, that is selection of terms of an AP. We are just recalling the topics of class 10th. I will not do so much question, you have to do by yourself from RD, and it is better to go through all the solved questions of RD Sharma, so that you can cover near about 70 to 80% questions of NCERT, because all the questions of NCERT you can see in RD either solved or unsolved. If we are asked to select three terms of an AP, then you can select it as A minus D, A plus D. Four terms, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. C, A minus D, A plus D. Common difference क्या आएगा? A minus A plus D, D आएगा. Again A plus D minus A, D. इस तरह आपको select करना है कि common difference बराबर आते रहे. If you know sum of n terms of an AP, then n can be found out using the formula n equal to Sn minus 1. This also you know in class 10th. Now I am doing question number example 2 of page number 19.13. I will read the question. Find four numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120. You are asked to find four numbers. If you are asked to find four terms, the selection is A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. So that you can assume that the four terms of AP be A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. And you are given that sum is equal to 120. That implies A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus D, A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus 3D, A plus 3D is equal to 20. All the D's get cancelled, then 4A equal to 20, you will get A equal to 5. That means you have got first term. अभी आपको first term मिला है, अब आपको common difference निकालना है, then you can form AP. For that, what is the next condition? Sum of squares. Sum of squares means sum of squares you are given it as 120. That implies A minus 3D whole square plus A minus D whole square plus A plus D whole square plus A plus 3D whole square is equal to 180. हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, टर्म्स को ऐसे लेना है कि इसका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए. यहाँ देखिए 2D आ रहा है, अगेन 2D आ रहा है, फिर अगेन 2D आ रहा है. इस तरह आप उसको अरेंज करना है. मैंने थर्ड और फोर्थ टर्म का बताया, 5 टर्म सेलेक्ट करना, तो आपको उसकी तरह मतलब सोच कर निकालना है. नाउ बाय रीअरेंजिंग, बाय सॉल्विंग इट, आई विल नॉट शो ऑल द स्टेप्स. आप इसको A minus B होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 4A स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर is equal to 120. Now by simplification get A square plus 5D square is equal to 30. That means A you have got as 5, that is 25 plus 5D square is equal to 30, implies 5D square is equal to 5, implies D is equal to plus or minus 1. The students used to write only plus 1. That is not right, because since it is quadratic you must have two roots. If D is equal to 1, then terms, how many terms you have to select? You have to select 4 terms. Then terms, if D equal to 1 and A equal to 5, then the numbers are, this number is 2, second is 4, third one is 6, fourth one is 8. आप इसमें put करेंगे, आपको आ जाएगा. If D equal to minus 1 and A equal to 5, the numbers will reverse as 8, 6, 4, 2. In this way, you can find the number of terms of a we can select terms of an AP, any number of terms on an AP by the given condition. This much is related to the selection. This much is the topic related to selection of terms of an AP. Selection of terms of AP में आपको 3 में A minus
3 टर्म्स है तो a माइनस डी ए प्लस डी, 4 में a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d और 5 एंड सो ऑन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिमेनिंग क्वेश्चंस। I will send you the pics, or if you are having RD Sharma, you have to go through each and every questions of the solved one only. Now next topic is properties of arithmetic progression. Properties of AP, that you know very much. Properties of AP. As I told you, if ABC are in AP, then 2b is equal to a plus c, that implies b equal to a plus c by 2. B is called arithmetic mean of a and c. Let us do one. There are number of questions. These are all questions from of the class 10th standard. I will do one question, that is remaining question you do by yourself. I am doing question example 2 of page number 19.36 of RD Sharma. You have to go through NCERT also. Question is, if a square, b square, c square are in AP, that you are given, you have to prove that 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are also in AP. That you have to do. Now there are two methods. I will do one, and the second part I will just explain. If a square, b square, c square are in AP, you are given that a square, b square, c square are in AP, then b square minus a square is equal to c square minus b square, implies b plus a into b minus a is equal to c plus b into c minus b. That implies, by just rearranging it, b minus a by b plus c. I am just taking this term to left side, is equal to c minus b by a plus b. Now the next step is very important. We are just rearranging b minus a by b plus c minus a plus c in order to bring the required result by b plus c. देखिए b minus a is coming, and the right side is c plus a minus b plus a. Due to the shortage of space, right side में क्या था, c minus b. देखिए c plus a minus b plus a upon a plus b. Now next term is multiplying both side by a plus c. Multiplying both side by 1 by a plus c. In RD Sharma it is written as 1 by a plus b. That is not right. That becomes b plus c minus a plus c upon a plus c into b plus c is equal to c plus a minus a plus b upon a plus b into a plus c. Question is little bit too lengthy, so that I have to rub it each time. Now if you separate it, you will get b plus c is getting cancelled, 1 upon a plus c minus 1 upon b plus c. Again separate it, you will get c plus a getting cancelled, 1 upon a plus b minus 1 upon a plus c. That means 1 upon a plus c. अब देखिए a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. तो फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा, this one. This is a1, this is a2 and this is a3. That implies 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon next term is 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus c. A plus c is remaining, are in AP. देखिए second term minus a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले गिवन कंडीशन से कंडीशन निकाला हमने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, उसके बाद दोनों टर्म्स को ऐसे रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए बनाया कि जो चाहिए उस फॉर्म में चेंज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंप्लीट रिपीटेड प्रैक्टिस करने से आएगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड होता है, हर मेथड यूनिक होता है।
So is this step and this step both are very important. This is the question related to the properties of AP. The remaining question you can do by yourself. Next topic is arithmetic mean. Arithmetic mean. मैंने आपको कहा था if we can insert arithmetic means. If you are given any two numbers A and B and we are inserting n arithmetic means. N arithmetic means, say A1, A2, etc. An. Then by the properties of arithmetic mean A, A1, A2, etc. An, comma B form an AP. Now I had told in the very beginning D can be found out using the formula B minus A upon n plus 1. A1 is the second term. Second term is A plus D, that is A plus B minus A upon n plus 1. And this one is, how many terms are there? N terms are inserted and there are two more terms, and this is a n plus 2th term, this is n plus 1th term. The n plus 1th term can be found out using the formula An is equal to A plus ND. N plus 1th. This is n plus 1 term, this is n plus 2. That is An is equal to An plus 1, that is small a plus nd, that is a plus n into b minus a upon n plus 1. ये मैंने आपको पहले बताया था. इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ. Insert 3 arithmetic mean between 3 and 19. 3 and 19. This is question example 1. Example 1 of page number 19.44. 3 और 19 के बीच में आपको 3 arithmetic mean निकालना है. तो let A1, A2, A3 be the 3 arithmetic mean between 3 and 19. Then the property for arithmetic mean 3A1, A2, A3 and 19 form an AP. ये अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी है. अगर आप दो नंबर्स के बीच में जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे वो रेस्पेक्टिव एपी बनेगा. नाउ फॉर्मूला D इक्वल टू B minus A upon n plus 1. B is what here? B is 19. That is A3 n plus 1. कितना आपको डालना है? 3. 3 plus 1. That is 16 by 4. That is 4. Now first one A1. मतलब second term A plus B. A is first term is 19. That is sorry, first term क्या दे रखा आपको? 3. 3 plus 4 is equal to 7. Now second arithmetic A plus 2D. That is आप डायरेक्ट भी ऐड करके ले सकते हो. आपके पास ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस आ चुका है 4. दैट इज A प्लस, ऐसा भी करना चाहता है ऐसा भी कर सकते हैं. A प्लस 2D करेंगे तो 3 प्लस 2D, 3 प्लस 2 इंटू 4 11. देखिए 4 आ गया. A3 A प्लस 3D या डायरेक्ट आप लिखिए कॉमन डिफरेंस आए तो 50. In this way you can insert any number of arithmetic mean between any given numbers. So the given 3 arithmetic mean are 7, 11, 15. These are, in this way we can insert any number of arithmetic mean between two given numbers. Now one of the very important question, this is question of NCERT. That is very important. This question is very important. You have to do it repeated practice. That is example 2 of page number 19.44. I will read the question. For what value of n, a raised to n plus 1 plus b raised to the power a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 whole upon a raised to the power n plus b raised to the power n is the arithmetic mean of, that is the arithmetic mean of a and b. This is very important. How we can do this question? Now since this is the arithmetic mean of a and b, by the given condition you can write this as a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n equal to a plus b upon 2. If a and b are given numbers, arithmetic mean is a plus b upon 2. By cross multiplication, 2a raised to the power n plus 1 plus 2b raised to the power n plus 1 is equal to a raised to the power n into a plus, I am showing each step, a raised to the power n into b plus a into b raised to the power n
plus b raised power n into b, that is 2a raised power n plus 1 plus 2b raised power n plus 1 is equal to a raised power n plus 1 plus a raised power n b plus ab raised power n plus b raised power n plus 1. नाउ ट्रांसफर, अब देखिए इसमें a raised power n plus 1 है, इसमें भी है, तो उसको सेम साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं. हमको इसमें से n का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस गिवन कंडीशन में से, that is 2a raised power n plus 1 plus 2b raised power n plus 1 equal to a raised power n into a raised power n plus 1 plus a raised power n into b plus ab raised power n plus 1 plus b raised power n plus 1. अब सेम टर्म्स को ले लेते हैं इधर, a raised power n plus 1 minus a raised power n plus 1 plus 2b raised power n plus 1 minus b raised power n plus 1, n plus 1 वाले टर्म को इधर ले लिया. दैट मीन्स a raised power, बाकी राइट में एज इट इज लिख दिया a power n b plus ab power n, that is a raised power n plus 1 plus b raised power n plus 1. By simplifying LHS, this become a raised to n b plus ab power n. Now take the term having a raised power together, a raised power n plus 1 इधर है, इधर a raised power n b है, इसको साथ में लेंगे. a raised power n b is equal to उधर ab raised power n minus ये टर्म ट्रांसफर हो जाता है तो b raised power n plus 1. That means from these two terms you can take, देखिए a power n into a हो जाएगा तो a power n बाहर आ जाएगा, that is 1a is remaining a minus b. यहाँ b raised power n कॉमन आ रहा है तो b raised power n को कॉमन लेंगे, a remaining here, एक b इधर रिमेनिंग हो जाते हैं. These terms are getting cancelled. That implies a raised power n by b raised power n equal to 1, implies a by b raised to the power n is equal to a by b raised to the power 0. इस टर्म में, इस फॉर्म में क्यों चेंज किया? जब तक आप बेस को इक्वल नहीं करेंगे आप एक्सपोनेंट्स को इक्वेट नहीं कर सकते. तो एनी एक्सपोनेंट रेज्ड पावर 0 इज 1, सो दैट दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर ट्रांसफर करने का टर्म स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रांसफर किया है, क्योंकि ताकि वो कॉमन फैक्टर कॉमन दोनों में से निकाल दो. दैट मीन्स सिंस बेस आर इक्वल यू कैन टेक equate exponent, that is n equal to 0. In this way you can find solve this type of question in which you are given the arithmetic mean of a and b as a raised power n plus 1 plus b raised power n plus 1 upon a raised power n plus b raised power 1. आपको समझ में आया? इसको मैं उम्मीद करती हूँ तो वापस इसको बार बार देख करके 2-3 बार क्वेश्चन रफ नोटबुक में या नोटबुक में करें, नहीं तो उसको बीच में से स्टेप छूट जाएगा. इसी तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसी का जैसा है, n प्लस 1 की जगह पे शायद तक a पावर n ऐसा कुछ है, आप और डिनोमिनेटर में a पावर n माइनस 1 समथिंग है, या आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज शायद 9.2 या 3 में मिलेंगे, पर चेक कर लेना. आज ही इसको देख करके उस क्वेश्चन को भी करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है एक एक करके इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है. अभी तक तो जो 2 रिलेशन फंक्शन वगैरह पढ़ा थोड़ा इजी है. अब जो पढ़ने जाएंगे एपी, जीपी, आफ्टर दैट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऑल आर डिफिकल्ट एंड न्यू फॉर यू. तो आप एक एक चीज को 10 बार समझकर उसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 5 ऑफ पेज नंबर 19.45. सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. और इस क्वेश्चन में दिस इज लेवल 2 दे रखा है, लेवल 2 देकर घबराना नहीं, क्वेश्चन करना है. प्रूव दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स इज n टाइम्स सिंगल m बिटवीन दम. आपको 2 नंबर दे रखा है. लेट a and b be 2 given numbers. Now prove that the sum of n arithmetic means, इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट करोगे तो उनका सम और इज इक्वल टू n टाइम्स, उनका जो सम आएगा दैट इक्वल टू n टाइम्स द am बिटवीन a and b. दैट मीन्स लेट a1 a2 एक्सेट्रा a and b n ams between a and b. Now by the properties of this arithmetic means a1 a2 etc an comma b form nap. जब आप अरिथमेटिक में इंसर्ट करोगे 2 नंबर्स के बीच में तो आपको वो जो सीरीज बनेगा या सीक्वेंस बनेगा वो एपी बनेगा. इसमें डी निकालने का फॉर्मूला आपके पास है,
b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब आपसे पूछा गया a1 a2 an इनका सम, that is a1 plus a2 plus etc plus an. How many terms are the n terms? And if you know an AP with first term and last term, you can find the sum using the formula n by 2 into a plus an, a1 plus an. But since a1 a2 etc and b forms an AP, a plus b, इसमें समझना ये थोड़ा सा नया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम इज इक्वल टू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम होता है। इसी तरह इसका देखिए फर्स्ट और लास्ट ले लिया, सेकेंड लास्ट ले लिया, थर्ड क्या होगा a2 सेकेंड लास्ट, इसकी पहले क्या होगा an-1। ये AP का एक बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AP, ये AP का प्रॉपर्टी है। जितने भी आप इंसर्ट करोगे इसका एक्सट्रीम का सम लेते जाएंगे, एक्सट्रीम सम ऑफ लेफ्ट एज वेल एज राइट एंड अगेन एक्सट्रीम सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, both are all are equal. That means a1 plus an can be replaced by this one a plus b, that is n by 2 into a plus b, that is n into a plus b by 2, that is n into am of a and b. That is the question. If question ये है the sum of n arithmetic means, sum of n arithmetic means this one is n times the am between a and b. तो इसमें ये चीज को ध्यान रखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने टुडे वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, क्वेश्चन रिलेटेड टू सम ऑफ n terms of an AP and insertion of AMs between given AP and some practical question. I hope that you understood all these questions very much, but again I am repeatedly emphasizing you do all these questions at least 2 times, otherwise you will find gap of each and everyday topic. आज मैंने जो पढ़ाया कल दूसरा पढ़ाऊंगी तो आज का टॉपिक गैप में आ जाएगा, इसलिए डेली इसका कंसिस्टेंस प्रैक्टिस करना और बाकी आरडी का क्वेश्चन भी करना। आरडी का क्वेश्चन करते वक्त आपको एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।